I cured my anemia, my vitamin D and vitamin B12 deficiency and major nutrient deficiency. 70% of the Indians are deficient in vitamin D. 50% of the women in our country are anemic, and vitamin B12 deficiency is rising, especially among the vegetarians because of lack of vitamin B12 option, or maybe because of lack of awareness. Hi, I'm Shivani, and today I'm going to talk about one of the serious silent problem of India, that is the nutritional deficiencies, its effects, its symptoms, and my journey of how I healed it, because I am no longer an exception person with lots of nutritional deficiencies from last 3 years. And last 1 year was when I started my recovery journey, and today I'm going to share what did I do, what were the symptoms, and what are the problems that you should notice and work on your nutrition deficiency. So when I was diagnosed with these deficiencies, so according to the medical report, the sufficient vitamin D 25 hydroxy mg/ml, it should be around 3200, and I was diagnosed with less than 3, which was a life-threatening deficiency. Okay, so most of us consider vitamin D as a bones nutrient, but let me tell you, vitamin D is also a happy hormone supporter. Okay, so lack of vitamin D is not only lethal for your bone health, but it is also very bad for your mental health. Now, pain in bone, cracking of your bones, being very sensitive to cold, and mental fog, less of mental clarity are the basic symptoms of deficiency of vitamin D, along with the hair fall. So when you have less vitamin D in your body, you will start getting hair fall and also scalp infection. In my case, I got seborrheic dermatitis, because of which I had to cut my hair really short, and also fungal infection becomes very common because less vitamin D. So now I'll talk about the blood. So my hemoglobin was 10.1 grams, and let me tell you, this was before my accident. Normal is said to be 11.5 to 16.5, and you will be surprised to know that most of the women, including 25 to 27% of the men in our country, they have less than 10 grams of blood, which clearly makes them anemic. So anemia is actually very life-threatening. So the symptoms which I personally felt was dizziness. Okay, I always felt like fainting. So fainting and dizziness, not being able to perform in your work properly. Hair fall. Again, hair fall is a major issue when you have less blood in your body. Less blood means less circulation. That means also less absorption. So whatever you eat, it is not going to get circulated everywhere. It will always feel like dizziness. Mood swing is a major problem of anemia in our body, very severe, and less blood means you have less circulation. That means less absorption of the nutrients. So aap jo bhi khana khayenge, that is not going to get absorbed in your body. In women especially, the problems in their menstrual cycle, in their periods, you will feel so irritated. Problem of mood swings arises when you have less blood count in your. It also creates problem in the pregnancy. So this is a very life-threatening deficiency. My next deficiency was vitamin B12. So the normal amount is considered to be 180 to 940. So 180 is the bare minimum. I was diagnosed with 85.46, which was very poor, even less than 100. And let me tell you, vitamin B12 is a very essential micronutrient. It is very important for the proper functioning of your brain and your nervous system. That means lack of vitamin B12, you are going to see normal symptoms are like not getting the mental clarity, unable to make decision. Your brain will not be able to focus at one particular point, right? But the major issues arises internally. Lack of blood formation, it will become very difficult for you to absorb or digest any of your food nutrients. So vitamin B12, its deficiency is rising alarmingly in the entire country, and especially in the vegetarian. I being vegetarian myself, this vitamin B12 deficiency was the major cause, root cause for most of my other deficiencies. So the first step is the diagnosis. Yes, हम जब तक चेक नहीं करवाएंगे, आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, हाउ वुड यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफिशिएंसी आर यू फेसिंग इट, और आप किस स्टेज पर है. तो फर्स्ट स्टेप वाज टू गेट माई सेल्फ डायग्नोस्ड.
after a 1 year of topical application of different lotions and shampoo, hair fall problem, acne problem, fungal infection problem, I realized that something is not right with my body, and I went to the checkup, and then I got all of these my medical reports. And let me tell you one thing, doctor will give you all the medicines that is required for you, but remember, medicines are just the supplement, right? It was my biggest mistake. I thought that I will just consume my medicines, complete my medicinal doses, and it would be enough for me, which is a biggest mistake and the biggest misconception. Okay, so medicines are just the supplements. Okay, they are not the base. So I was consuming medicine for more than a year, and it started impacting my digestive system. That means मैं जो भी खा रही थी वो मेरी बॉडी में absorb नहीं हो रहा था. I lost my appetite, and then I realized that medicines are not giving me benefits, rather it is somewhere destroying me internally. And the problem was not the medicines, it was important for me to survive. Problem was my extremely disgusting poor lifestyle. Okay, I was so focused on medicines that I completely ignored the importance of lifestyle and basic food items. So generally in middle class family we do not make separate diets, and I used to think that one glass of juice kya you khar lega. I had a very negative misconception regarding the natural food and natural healing methods, and that is what made me so much dependent on the medicines. But हम पूरी जिंदगी मेडिसिन नहीं खा सकते. You can't depend on medicines your entire life, and that was the time when I decided to quit my medicines. Yes, I quit my medicines after 3 months and 45 days and again 2 months. Like basically 1 year of alternate medications, I decided to quit it, and my body had very little benefits actually. I would not lie, they helped me survive. I wouldn't have been able to survive without those medicines, but more harsh medicines and chemicals will bring much worse situation to your body if you are not focusing on your lifestyle and if you are not doing anything to detox it, because आपके किडनी एंड लिवर पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है एक्सट्रीम मेडिकेशंस की वजह से. तो 1 साल ठीक ना होने के बाद में और 2 साल बहुत सारी चीज़ें सफ़र करने के बाद में माई मेंटल स्टेबिलिटी वॉज नॉट एट ऑल राइट. एंड as I said, vitamin D is very important for the proper functioning of your brain. It is a happy hormone. So that was the time I decided to get into meditation and give a chance to natural healing, which I had zero belief, honestly. I know YouTube is filled with the videos talking about the meditation and physical health and this and that. In my life, I was mentally active so much and physically activity was zero, right? और इसका रिवर्स होना चाहिए. हम मेंटली इतने एक्टिव होते हैं और हम फिजिकली कोई भी एक्शन नहीं लेते एंड देन वी एक्सपेक्ट आवर बॉडी टू बी हेल्दी. सो आई जॉइंड द meditation classes and yoga classes, and after 1 month I was feeling little better. I would not exaggerate because I was feeling little better. It was just 1 month, and somehow I decided to study yoga and mental health at university. This is my 1 year of routine that I followed. As I said, I joined university for yoga classes and to study yoga and natural therapy. So my classes was from 7 in morning. I used to wake up early and go to my university to practice yoga and meditation and study there. So this one particular thing, it improved my entire sleeping cycle. I used to sleep at 2 or 3 and wake up at 11. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रात को एक्टिव होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो नहीं बन रहा था, और सुबह आई वाज नॉट गेटिंग सन. नाउ अगेन तो माय स्लीपिंग शेड्यूल इम्प्रूव्ड. सेकेंड, आई वाज मेंटली मोर एक्टिव एंड फिजिकली नॉट एक्टिव एट ऑल. तो वहाँ जाकर के योगासन प्रैक्टिस करने से 2 घंटे मेरी फिजिकल बॉडी का मूवमेंट हो रहा था. आई वाज एबल टू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज and follow all sorts of yogasana that was important to activate my body and detox my body. So that helped me get physically fit. Okay, so this was enough for my better mental health and physical health. Second thing I would say, for my blood. So we had a rule in our university that after practicing yoga we have to eat something healthy. So I never had habit of टेकिंग ब्रेकफास्ट. तो यूनिवर्सिटी जा करके आई यूज टू कंज्यूम जूस, ओके, जो मैं घर से बना के ले जाती थी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, 1 ग्लास बीटरूट जूस बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ उखाड़ सकता है.
Entire Ayurveda and doctors are talking about the benefits of amla and benefits of beetroot juice and importance of carrot and apple in your diet. And I was so stupid not to believe in it. But in that 1 year of yoga journey, every morning I consume beetroot juice along with amla, and this has given a magical effect on my anemia. I mean, I was able to regain my blood just after 45 days to 2 months. I was able to feel better. I mean, रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव थे कि मुझे लिटरली वो रिजल्ट्स नजर आ रहे थे अपनी बॉडी में. ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट ट्राई इट फॉर 45 days. One glass of juice can do magic in your life, especially if you are suffering from less of hemoglobin. And yes, adding one piece of amla. So supportive nutrients are very much important. आंवला में इतना विटामिन सी होता है दैट वो भी संतरों को बीट कर सकता है. तो adding that to my beetroot juice was magical. I was able to cure my anemia. I was able to increase my blood count in my body. The entire world talks about the benefits of amla. One glass of juice. With this routine, I was able to cure my less hemoglobin count just in 3 months. Yes, it took me 3 months and I was able to heal it. I don't have my current report where it was mentioned, but from 9 I was able to get into 10, and very soon after 2 months I was able to recover it up to 11 point something, which was a normal level, and now I haven't got it checked, so I can't tell my current hemoglobin status. Next is the vitamin B12. अब ये ना वेजिटेरियन सोर्सेज में थोड़ा कम होता है, बट आई गॉट टू नो कि सुबह स्प्राउट्स खाने से विटामिन B12 बढ़ता है. आई डिपेंडेंट ऑन दी विटामिन B12 टैबलेट्स फॉर मोर देन 2 years, and later on I started consuming sprouts. I saw a video of a YouTuber, Vit-D B12, he is very famous, talking about vitamin B12 and how the drumsticks plant leaves, जिसको हम सहजन कहते हैं, उसके पत्ते, they are so rich in it. So I had a tree nearby me, so I started consuming those leaves every morning. I used to consume it randomly, or sometimes I used to get into tablets, and sprouts became a very common food for me in my morning. So that helped me get over it. And when you are consuming vitamin C, hemoglobin rich foods, iron rich foods, you know, you will start recovering, और vitamin B12 का absorption rate, सारे nutrients का absorption rate अपने आप body में increase होने लग जाएगा. Now, third major nutrient, the vitamin D. Let me tell you, the entire world says कि धूप से कैंसर होता है, धूप में मत बैठो, धूप से टैन हो जाएगा. We are so much scared of sun that we have very little sun exposure, and sun is the best source of vitamin D. I know capsules are important. I consume the vitamin D capsules. It is not feasible for everyone कि वो दिन भर धूप में बैठे रहे. But जब मैं सुबह उठती थी to practice yoga, I used to massage my bones with oil, and अपने abdomen को और अपने back area को I used to expose it in direct sunlight. Okay, तो उससे क्या होता था, जो मेरे major organs होते थे जिसके functioning में problem हो रहा था because of lack of vitamin D, वहाँ direct sun पड़ती थी, और जो मेरा bone में जो pain था, I became cold sensitive. My bones were unable to tolerate any kind of cold, or even the air, or even the fan. It became difficult for me to sit under the fan. Sitting in the sunlight gave me so much of comfort. I'm not exaggerating. आप अगर 45 days भी आप धूप में बैठेंगे every day, you massage your body, expose your internal organs, expose your body and bones. Trust me, आप जो 2 साल की मेडिसिन आपको कुछ नहीं कर पा रही थी ना, वो 45 to 50 days में धूप में बैठ करके I was able to feel the benefits of it. Sun is a major source of vitamin D. So you just wake up, massage your bones, your knees and elbows and your backbone, and just sit in the sun. If you don't want to exercise, that is okay. But I used to practice yoga under the sun, and that has helped me recover my vitamin D deficiency a lot. And trust me, tan थोड़ा बहुत होगा, वो हट जाएगा. सुबह की धूप उतना tan create नहीं करती है. मुझे भी बहुत टैन हुआ था. I used to feel like a zebra, but that will be removed. Tanning is not a major issue. पहले जिंदा रहना ज़्यादा important है, and trust me, this sun is a major source of vitamin D. और उससे आपके happy hormones बढ़ते हैं. You will literally feel happy. You will start feeling happy. So I'm giving a brief summary of it. How I cured my anemia, my vitamin D and vitamin B12 deficiency, and major nutrient deficiency. So waking up in the morning, drinking 1 glass of lemon water, it has wonder effects. It is very magical for your body to detox and give you that kickstart in the morning. So I consumed it.
Then I practiced 2 hours of yoga under the sun in my university. And after that, and practicing it under the sun gave me enough of vitamin D that I needed. And I was also taking some supplements for the vitamin D, so I was able to recover from it. So my vitamin D problem was solved. Second, my physical fitness problem was also solved. Third, my sleep cycle was solved because I had to wake up early in the morning to join the classes for my university. And इन चीज़ों की वजह से vitamin D की प्रॉब्लम थी. Then after practicing yoga, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, the first thing we consume get absorbed really quickly in our body. Okay, तो my routine was to consume 1 glass of juice every day, every single day for 45 days to 50 days or sometime for 3 months continuously, and then I used to take a break. So drinking beetroot juice along with carrot, apple and amla in it, that helped me with my anemia, iron, hemoglobin problem. So I was exercising and then I was getting the juice, so it was getting absorbed in my body really fast. And after that, after half an hour of consuming the juice, when I came home, I used to have my breakfast like chapati and curd. And yes, let me tell you, try adding curd in your food because it is very rich in probiotic. आपकी gut health के लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपका absorption बहुत अच्छा होगा. तो दिस वॉज माई वेरी बेसिक रूटीन. मैंने कोई खास ऐसा डाइट फॉलो नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मंगवाया. जो भी घर में बनता था यूज टू कंज्यूम इट. बट सुबह उठ करके मलासन में बैठ करके लेमन वाटर कंज्यूम करना और योगासन प्रैक्टिस करना डायरेक्ट अंडर द सन इन मॉर्निंग एंड देन ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ जूस. ये एक इतना रूटीन इतना पावरफुल है, इतना मैजिकल है. ट्रस्ट मी, आई एम अ योगा ट्रेनर. मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ, काफ़ी लोगों को मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ. दे ऑल आर गेटिंग मैजिकल बेनिफिट्स. आप 45 डेज के लिए इसको फॉलो करेंगे ना, यू विल सी इमेंस चेंजेस, नॉट जस्ट फिजिकली इंटरनली बट ऑल्सो मेंटली. धूप में बैठने से आप इतना मेंटल रिलीफ आपको मिलेगा. आपके विटामिन डी जब बॉडी में कंप्लीट होगा, उसकी नरिशमेंट होगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. ओके. एंड बीटरूट जूस, इट विल हेल्प यू रिकवर योर एनीमिया. आपके जो भी मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, कीप कंज्यूमिंग इट. बट ट्राई कि आप पूरी जिंदगी मेडिसिन नहीं खा सकते ना, तो ट्राई कि एटलीस्ट 45 डेज के लिए, 2 मंथ के लिए आप इस जूस को कंज्यूम करें. अभी विंटर चल रहा है, ये सारी सब्जियां बहुत सस्ता है. आंवला, इट इज कॉल्ड अ रसायन इन आयुर्वेदा. इट इज लिटरली अ सप्लीमेंट इन इट्स ओन. और अभी ये बहुत चीपली अवेलेबल है मार्केट में. प्लीज ट्राई कंज्यूमिंग इट. ठीक है, उसको जूस में ऐड कीजिए, कंज्यूम कीजिए. उसके बाद आप दिन में रोटी खाइए, चावल खाइए, जो खाना खाइए. एंड यस, एट नाइट बिफोर स्लीपिंग आई यूज टू कंज्यूम टर्मरिक मिल्क, ओके, और हल्दी वाला पानी अलॉन्ग विथ 1 ड्राई फ्रूट लड्डू. नाउ एज आई सेड कि जब हमारे बोन्स फ्रेजाइल होते हैं, उनकी बोन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एज आई सेड, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. तो जो सेसमे सीड्स होती है, दे आर हाईली रिच इन कैल्शियम. ओके, दे आर वेरी गुड फॉर विटामिन डी अब्जॉर्प्शन. फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन कंज्यूम फिश ऑयल और समथिंग. बट बीइंग अ वेजिटेरियन, मेरे लिए ओमेगा 3 के लिए आई डिपेंडेड ऑन द फ्लैक्स सीड्स ओनली. एंड सर्टेन ड्राई फ्रूट्स अलॉन्ग विद द फॉक्सनट, जिसको मखाने कहते हैं, उन आई डिपेंडेंट ऑन दीज सीड्स फॉर माई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो आई यूज टू रोस्ट देम, सारे सीड्स को, फ्लैक्स सीड्स को, सेसमे सीड्स को, मखानों को, और कभी कभी आपने काजू ले लिया, कुछ भी जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, उन सबको रोस्ट करके और मैं उसको गुड़ में उसके लड्डू बनाया करती थी. एंड आई यूज्ड टू कंज्यूम इट. अभी विंटर्स चल रहे हैं, आई डोंट रिकमेंड इट इन दिस समर क्योंकि वो बहुत वार्म नेचर का होता है. बट अभी ठंड में यू कैन कंज्यूम इट डेली. एटलीस्ट आप 2 महीने 3 महीने उसको खा करके देखो. ये हेल्दी फैट्स ना, जब आप दूध के साथ में कंज्यूम करते हो ना, इट हैज अ वेरी ग्रेट एब्जॉर्प्शन रेट. विटामिन डी इज ऑल्सो फैट सोल्यूबल. तो जब भी हम विटामिन डी के कैप्सूल्स खाते हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ या तो मिल्क के साथ में लेते हैं, या एनीथिंग विच हैज लिटिल हेल्दी फैट इन इट, या हेल्दी ऑयल इन इट, राइट. सो दिस वॉज माई इंटायर रूटीन एंड आई इम्प्रूव्ड माई स्लीप साइकिल. मैंने 11-12 बजे तक सोना स्टार्ट कर दिया. आई नो ये बहुत लेट है, बट 2-3 बजे से कहीं बेटर है 11 बजे सो जाना. सुबह 7 बजे तक उठ जाना, सुबह उठ करके लेमन वाटर पीना, फिर धूप में बैठ के योगासन प्रैक्टिस करना, फिर जूस कंज्यूम करना. तो कैन यू सी, जो जितने डिफिशियंसीज आते जा रहे थे ना, वो सब कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट हो गए थे. एंड बिकॉज ऑफ द योगा प्रैक्टिसेस, और अगर आप जिम जाते हैं या आप रनिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा ना, इट विल, योर न्यूट्रिएंट्स विल स्टार्ट गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. आपका न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन रेट काफी बॉडी में बढ़ जाएगा, यानी कि अब आप जो भी खाएंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा.
एंड आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट आई डिड. एंड इफ यू आर फेसिंग इट, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप कम से कम 2 महीने आप इस पूरे रूटीन को फॉलो करने के लिए करने का ट्राई करें. अगर आपको वो 15 मिनट्स ऑफ योगा सीरीज चाहिए जो मैंने प्रैक्टिस किया था आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, प्राणायाम कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से आसन करने हैं हमको, डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट. आई विल पोस्ट अ वीडियो. और जूस की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है. ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज इशूज, आप अपने मेडिसिन डोज कंप्लीट कीजिए, बट आपको आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस तो लेके आना होगा, बिकॉज आप पूरी जिंदगी दवाइयों पे नहीं रह सकते. एंड मेडिसिन एंड मेडिकल हेल्प इज अ लग्जरी इन इंडिया. वो बहुत कॉस्टली पड़ता है ऑन आर पॉकेट्स. तो ट्राई योर बेस्ट टू इंक्लूड लिटिल changes, little good habits, little great diets and natural supplements in your life, and you will see the magical results. So that's all that I had to share. If you are going through any of these deficiencies, trust me, उसको ठीक करना is not that difficult. उसको sustain करना is very difficult, right? अपने lifestyle में changes लाना is little difficult, but again it is not impossible. I have cured myself. I have become a practitioner from a patient, and you just have to bring little changes in your diet, in your sleep cycle, in your daily routine, and trust me, you will be able to heal yourself. And if you need any kind of help, I am here to help you with Yogi Gamya. This entire platform is meant to work on your health and to provide you with yogasans. Do let me know if you want any kind of help, and thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है, please consider subscribing my channel. Thank you so much.